नमस्ते बच्चों, आज हम पार्ट 2 काम सब अच्छे हैं का भाषा ज्ञान अभ्यास करेंगे। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 13, दैट इज भाषा ज्ञान और नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। पहला अभ्यास है, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। Fill in the blanks with the given words. You can see there a box is there and few words are there. You have to select the correct answer from there. So, we'll start with ka. First fill in the blanks is Vinoba ji garibo dash sahayak the. So, you have to choose the correct answer from that box. दूसरा, विनोबा जी भूदान डैश यात्रा पर थे। तीसरा, विनोबा जी पाठशाला डैश ठहरे थे। चौथा, विनोबा जी ने लड़के डैश अपने पास बुलाया। पांचवा, विनोबा जी डैश भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। So now let's check the answer. The first one, विनोबा जी गरीबों के सहायक थे। So this is का plus a symbol K. Second, fill in the blanks. विनोबा जी भूदान की यात्रा पर थे। So का plus E symbol. Third, विनोबा जी पाठशाला में ठहरे थे। माँ plus a symbol and ang symbol also. Fourth, विनोबा जी ने लड़के को अपने पास बुलाया। का plus o symbol को। विनोबा जी डैश भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। आंसर इज का plus a symbol का। विनोबा जी का भूदान यज्ञ प्रसिद्ध है। दूसरा अभ्यास है, नीचे दिए गए विराम चिन्हों के सामने उनके नाम विकल्पों में से चुनकर लिखिए। सो यू कैन सी सम पंक्चुएशन मार्क्स। द फर्स्ट सर्कल, द पंक्चुएशन मार्क इज एक्सक्लेमेशन मार्क। सेकेंड वन, इट्स अ कॉमा। थर्ड, इट्स full stop symbol, but in Hindi we write like a straight line. Then the fourth punctuation mark is question mark. So now two options are given there. You have to choose the correct option for these punctuation marks. The first one is exclamation mark and the two options are given, Purna Viram and Vismayadi Bodhak. So you have to choose the correct one. Second is comma punctuation. In the bracket it's given Alp Viram Prashnavachak. Third is full stop. In the bracket two options are given, Alp Viram and Purna Viram. Fourth is question mark. The bracket you have two words, Prashnavachak and Purna Viram. So you have to select it. Now let's check the answer. First one, the correct answer is Vismayadi Bodhak. Second is Alp Viram. Third, Purna Viram. Fourth, Prashnavachak. Now you have to write these exercise in your notebook. The next we have Rachanatmak Abhivyakti or creative expression. Here you have to write 5 conversations with your mom when you came from school. So this is the conversation. The ma means mother. So mother is asking her daughter, तुम इतनी late कैसे हो गई school से? So why you are so late? बेटी means daughter. She replied, 8 से स्कूल में वार्षिक महोत्सव की तैयारी शुरू हो गई. So from today
we started our annual day preparation. माँ, कब है तुम्हारे स्कूल का वार्षिक महोत्सव? When is your annual day function? बेटी, पता नहीं, अभी तारीख बताया नहीं है. We don't know the date. माँ, तुमने लिया भाग? Have you participated? बेटी, हाँ, हमारा डांस है. Yes, I have participated in a dance program. माँ, अच्छा, हम सब चलेंगे तुम्हारा डांस देखने. Okay, we will all come to see your dance. बेटी, ठीक है माँ. Okay, mother. So this is the conversation between mother and daughter. So you have to write it in your notebook. Next exercise is the second one. Collect pictures of some great men. You have to collect the pictures and paste it in your notebook. Third exercise is, how will you help in keeping your house clean? So the first one is, अपने कमरे को स्वयं साफ करें. You have to clean your own room. Second, अपनी चीज़ों को बिखरे नहीं, ठीक से रखें. Do not scatter your things, keep it properly. Third, स्टडी टेबल पर कागज़ और किताबों को ठीक से रखें. Keep your books, papers properly on your study table. Fourth, घर की सफाई में अपनी माँ की मदद करें. Help your mother in cleaning your house. Fifth, अपने स्वयं के शौचालय को साफ करें और किसी और को साफ करने की प्रतीक्षा नहीं करें. The meaning is, you have to clean your own toilet and you should not wait for other person to do it. These all exercise you have to write it in your Hindi notebook with proper date. That's all for today. We'll meet in the next class. Dhanyavad.